हाँ। देख अभी आ गया। एक मिनट, आपका मुझे वॉइस चेक करा था ना, एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैडम, आ रही है बस। आपको आ रही है मेरी? आपको मेरी मेरा आवाज़? वीडियो? हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। ठीक है, वीडियो भी दिखाई दिया। हाँ, ठीक है। हो रहा है ना? अभी आवाज आ रही है ना? आ रही है बस। यही लिंक था ना, सबको देना है? हाँ, ये लेंगे। हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग तू कर रहा है? हाँ। डिस्प्ले करके देख रही हूँ, हो रहा है क्या? देखो। वो गाना वाला तो तू चालू कर देना वहां से। चलो। मतलब खाना वाना, हाँ। चलो। आ रहा है? एक मिनट, हाँ दिख रहा। आवाज आ रहा है कि चेक कर? बोलो। नहीं आ रहा बस। हाँ आया। हाँ, ठीक है। ठीक है। मेरी भी आईब्रोज पे आ रहा है, देखो ना। हाँ। मेरा हाँ, आईब्रो। तेरे आईब्रोज पे आ रहा है, पता नहीं सुमित सर के लॉगिन पे आ रहा है वैसे। तो मेरे सिलेक्ट हो को भी गया। आ रहा था। जाने दे, तू थोड़ी वहां से दिखेगा, मैं दिखेगी ना। मेरा यहाँ आईब्रो पे, ठीक है। यहाँ पे अफजल सर को बैठा हूँ ना। अरे पापा, सबको ज्वाइन करने बोल, पता चला 10 लोग ही है। ठीक है, मैं बोल के आता हूँ। हाँ, चल।
Good afternoon, good morning, and warm welcome to one and all present here. I'm Ms. Sushma Kindalkar, your host for today. I welcome each and everyone for the 199th virtual webinar of Sadgun Sang Meet. Topic for today is Introduction of Non-Destructive Testing, which is taken by Mr. Afzal Hassan. The topic shall cover visual inspection, radiographic test, penetrant test, magnetic particle test, ultrasonic test, followed by question and answer session. Agenda for the Sadgun Sang Meet: virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, introduction of the speaker, presentation by Mr. Afzal Hassan, question and answer session, and at the end, the closing session. Sadgun Sang, conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sang is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Brief introduction of Dr. Sundar Kataria. He's the Chairman and Managing Director at ICS Private Limited. Mechanical Engineer, AMIE, Honorary Doctorate into Business Management. Experience is into nuclear RAPP. He started his career in building India's first nuclear power plant at Rawat Bata, Kota, Rajasthan. Oil and gas, EIL. He contributed in developing India's first oil and gas field at Bombay High since its inception. DNV. He was head of industry and offshore development with DNV for 2 decades. ICS. He's a founder of first Indian conformity assessment and inspection body known as International Certification Services Private Limited, which is a provider of total quality solutions under single umbrella with a wide spectrum of services. Achievement. Lifetime Achievement Award for NACE Corcon. Received several national and international awards. Now I would request Dr. Kataria to virtually inaugurate today's session. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah Shatru buddhi vinashaya Deepajyotir namostute Deepajyotir namostute Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Please join us for the recitation of Gayatri Mantra. Introduction of the keynote speaker, Mr. Afzal Hassan, sir. He's the Assistant Vice President for
inspection at International Certification Services Private Limited. Academic qualification, B.Tech in Mechanical, ASNT Level 3, Ultrasonic Testing, Magnetic Particle Testing, Penetrant Testing, BARC-RT Level 2, experience into non-destructive testing, quality control and quality assurance, third-party inspection, welding, pipeline. I would request sir to please continue with today's session. Over to you, sir. Yeah. Thank you, Sushma. Good morning to all. So today we will discuss on training session is basically on introduction of entity. Hello, my voice clear? मैं कल सेशन ज्वाइन करने गया Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Screen visible है? Yes, sir. Visual. Oh. Yes, sir. So welcome in the session of non-destructive testing. Basically, entity is a combined application of science, physics, math, chemistry to create the comprehensive process that can be used for inspecting, examining, testing of the material or component of to find the flaw, defect, discontinuity on the surface, subsurface, and entire volume of the component, while maintaining the serviceability of the component after inspection, without causing any damage to its original form or user. Usefulness, so that is very important because जहां भी हम एनडीटी करते हैं उस एनडीटी का पर्पस ये है कि जो इक्विपमेंट या जो मटेरियल का एनडीटी करेंगे उसकी कोई भी प्रॉपर्टी लॉस ना हो. As a quality assurance and quality control, it is a management tool and it play a vital role in the industries such as aerospace, pipeline, bridge, refineries, oil platform, automobile, railway line, shipping, process plant, as well as a power station. It can help prevent a failure that could have an adverse impact on safety, reliability, and environment. तो मेन पर्पस है कि एनडीटी करने से कौन से जो प्रोबेबल डिफेक्ट्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें और फिर एवॉल्वेट करके वी हैव टू डिसाइड वेदर द डिफेक्ट साइज इज विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट और बियॉन्ड दैट लिमिट. एनडीटी का यूज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में होता ही है. इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट underpins all of all their operation. However, in order to utilize the effective and comprehensive understanding of various methods available, their advantage and disadvantage and the knowledge of the different specification and relevant standard is crucial. So while we do the NDT, it is very important the applicable standards क्या बोलता है उसमें क्या requirement है and the product knowledge also very important. Everybody know non-destructive testing is carried out in medical field also, but in day-to-day life, non-destructive word are not used because this is the engineering terms which use in the engineering testing. But we do the NDT in medical field in our life, like these are the NDT method. It should be noted that while the medical field use many of the same testing process, the term NDT is generally not used to describe the medical application, but common image non-destructive test used in the medical X-ray, CT scan, sonography, MRI, ECG. So these are the NDT method, but we don't say it is NDT. But everybody know these are the NDT method because when we do these tests, हमारी बॉडी पे कोई भी इस तरह का ऑपरेशन या फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता. That's why these tests is called the non-destructive testing. X-ray are the imaging that use a small dose of ionized radiation to take a picture of the inside of the body called radiograph. So, जब हम इसको setup of the radiograph is seen in this picture, there is a X-ray beam, X-ray machine, and the X-rays are produced from the X-ray tube, and these X-ray has passed from the body which we want to take a
image of the inside of the body parts, and back side of this body parts placed a radiograph, a film. Film basically is the highly sensitive of radiations. तो ये एक्सरे बेसिकली नाम के सोर्स से इसका नाम एक्सरे रखा गया। तो यहाँ पे रेडिएशन सोर्स एक्सरे यूज करते हैं और एक्सरे हमारी बॉडी से पास होके फिल्म के ऊपर एक इमेज बनाता है। जैसे आपके सामने ये इमेज है, ये इमेज आपको ये दिखाती है कि बोन्स आर फ्रैक्चर्ड, कितनी लोकेशन से फ्रैक्चर है, कहाँ पे फ्रैक्चर है और किस तरह से मिसप्लेस है, so that without operation we can find out the location of the fracture and number of fractures, so that this is called non destructive testing, but we don't know कि इसको NDT कैसे बोलते हैं, but Yes. because we do, Yes. we say कि it is a x-ray give the image of your internal body parts. So broken bone easily seen in this slide. Now one more method, it is called computerized tomography scan. Short में इसको हम CT scan के नाम से भी जानते हैं. A CT scan use the computer and rotating X-ray machine to create the cross-sectional image of the body. These images provide more detailed information than normal X-ray. But radiations are used in this machine. Around 500 times radiation dose are provided, are given to the basically patient. So it is a highly dose radiation dose are used. So that's why we should avoid jitna ho sake, because safety is also very concern from the radiations. So, but there is a very one advanced benefits. X-ray give a one single image, but sometimes defect could not be detected in the X-ray image. But because we do the X-ray in CT scan at a different angles, so we can do the detailed evaluation of the recorded image. That's why doctors recommend CT scan if sometime image proper results not found in the X-ray. MRI use a strong magnetic field, radio wave and computer to create a detailed cross-sectional image of the internal organs and structures. But MRI में हम यहाँ पे जो use करते हैं, this is basically high magnetic field. Inside we put the body inside the high magnetic field and internal image of the body are recorded. So it is safer than, it is 100% safe. जबकि MRI में एक radiation hazards involved होता है. But we can do detailed evaluation of our internal organs or body parts. Sonography. Sonography is just like we called ultrasonic testing in engineering. The same, but the word terms is different. Sonography. We used ultrasonic testing word in the engineering. Sonography is a procedure that uses the high frequency sound wave to scan the internal organs or parts of the body. Without any damage our body, we can find out internal image and give the good results. So these are the NDT method. Just it is a comparison in the medical and engineering. Now ECG, electrocardiogram and electrocardiogram record the electrical signal from the heart to check the different heart conditions. Electrodes are placed on the chest to record your heart's electrical signal, which cause the heart to beat. Accordingly, we used in the ultrasonic testing, we use the ultrasound. Acoustic emission testing is the same. We in the engineering field, where we evaluate or study the growth of cracks. So acoustic emission, one of the advanced NDT method, where the same principle like ECG in engineering. Stethoscope, यहाँ पे हम साउंड भेज के बेसिकली लंग्स की कंडीशंस को जानते हैं. तो this is the basically NDT method. Just
कंपैरिजन मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो एनडीटी की जाती है उन दोनों का क्या रिलेशन है. So why we do the engineering basic? Why we do the NDT in engineering? All the equipment, products, and material have a standard design requirement, projected life. However, the sometime due to the defect which may undetected during production, fabrication, or service delivery, they may need to be replaced or undergo extensive repair. Otherwise, unsafe condition or catastrophic failure might be consequence of neglecting their unfit condition for service. The resulting cost due to project shutdown can be large. In such cases, NDT used to ensure the effective and durability of the equipment. Safety assurance. NDT gives the safety assurance. NDT is carried out to certain that the component or material being used are not damaged or faulty and are fit to be used by personnel. The result of testing can show whether the component need to be repaired or if they are safe for operation. When the NDT properly used in industries involved with the volatile high pressure machinery, NDT can not only prevent the catastrophic failure and identify, resolve the disastrous problem, it can even save the life. Failure prevention. If defect is identified, definitely we can prevent the failure. We take a necessary action to repair the defect. Quality assurance, yes. NDT give the offer the reliable and accurate result, which can provide the stability. Since this testing method does not damage the component, all the piece of equipment and machinery can be tested, which can minimize the inaccuracy of test result and determine irregularities. Cost efficiency. Various industries need to comply the different set of rule and regulation and meet the different type of safety standard. To meet the industry requirement for safety, machinery need to be regularly tested. Non-destructive testing offers some of the most cost-effective method of inspection. On the other hand, the result of regular testing and prevent failure, manufacturing malfunctions or breakdowns, which would be far more costly to maintain instead of undertaking regular maintenance and repair when the cost. Regulatory requirement जैसे pressure vessel है, lifting tools tackles है. These are the regular NDT requirement every 1 year. जैसे lifting tools tackles का inspection करवाना होता है. Every 6 months में physical inspection or every 1 year all the lifting tools tackles का PT or MPT is required as per the factory rules or regulations. Now the standard for the personal qualification and certification. Why it is requirement? Because कोई भी आदमी एनडीटी नहीं कर सकता जब तक उसका सर्टिफिकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो. ये नेशनल और इंटरनेशनल ऑल कोड्स क्लियरली डिफाइन दीज रिक्वायरमेंट इन द ऑल कोड्स, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो. तो दीज आर द कोड्स जो कि एनडीटी सर्टिफिकेशंस के लिए पर्सनल सर्टिफिकेशन की गाइडलाइंस है. वन, these are the 3 standards. American Society for Non-Destructive Testing has designed these standards. One is SNTTC1A, which is more famous, or you can say ki acceptable standard in the industry. This according personal qualification and certifications are given in the industry. Personal qualification and certification in the NDT provide the guideline for the employer to establish in-house certification. तो ये जो document है SNTTC1A, this is basically a guideline document है, वो भी किसी NDT company के लिए. तो NDT company can refer these guidelines and prepare a routine practice. According to routine practice, they can certify their own NDT personnel. इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. सम जो रिक्वायरमेंट्स है, इंडस्ट्री कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस एंड रीसर्टिफिकेशंस एंड बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ द पीपल. जितने भी बेसिकली एनडीटी पर्सनल्स हैं उनका
re-examinations and examinations and performance evaluation. These are the for this requirement guidelines is defined. So based on the education and experience, industry can modify that requirement, but cannot eliminate it. As CP 189, this is the American national standard, established the minimum requirement for the qualification and certification of NDT and predictive maintenance, personnel and detail, minimum training, education, experience requirement for the NDT personnel, and provide the criteria for documenting qualification and certification. But according to this document, whatever the requirement is mentioned in this document, that should be complied for the qualification and certification. Industry cannot alter any requirement. NDT certification, central certification program called ACCP. NDT certification ACCP program for the NDT personnel by the both the written and hand-on practical examination by third party. तो अगर हमको इसमें certification करना है तो इसमें कोई third party involve होती है. वैसे ही in India, Indian Society for the Non-Destructive Testing, it is head office of ISNT in Chennai. तो इंडिया में अगर हमको कोई एसएनटी का एनडीटी का सर्टिफिकेशन करना है तो आईएसएनटी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि IS 13805 को रेफर करके सर्टिफिकेशन एनडीटी लेवल 1, 2 एंड लेवल 3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करती है. IS 13805 जनरल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनडीटी Next is ISO, International Organization for Standardization. ISO 9712 is one standard which is talks about the NDT qualification and certification for NDT personnel. So this standard, अगर suppose हमको 9712 का certification चाहिए for NDT personnel, तो it is not basically employer based. 9712 certification is issued by the third party accredited from the National Accreditation Board. तो जो भी organizations हैं जो कि NDT का certification करते हैं ISO 9712 से, उनके पास National Accreditation certification होना must है. Now visual examination. So visual examination in NDT is the very important because all NDT उसमें सबसे पहले visual examination की requirement है और without visual examination you cannot do any NDT. Visual examination के लिए it is very important कि near vision acuity should be perfect. Examination should ensure that the natural or corrected near distance acuity in at least one eye such that the applicant is capable of reading minimum Geiger number 2 or equivalent type and size letter at the distance designated on the chart but not less than 30.5 or 300 mm on the standard Geiger test chart. The ability to perceive on ortho letter minimum 8 or similar test pattern is also accepted. This should be administered annually. तो बेसिकली जब आप अगर आप एनडीटी में इंगेज्ड हैं, आपके पास एनडीटी का सर्टिफिकेट है, तो जो भी एनडीटी एजेंसी आपको एनडीटी सर्टिफिकेशन देती है तो फर्स्ट आई टेस्ट इज रिक्वायरमेंट. तो इनिशियली आई टेस्ट करना होता है जिसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम J2 नंबर का जो चार्ट है वो रीड करना आना चाहिए. मिनिमम 300 distance should be shall not less than 300 mm. Yeah, you can say 12 inch. So if you are able to read, it means you can certify you are eligible for NDT visual examination. If suppose you are not able to read the J2, so you can use the lens, but it is the requirement कि आपको J2 minimum read होना चाहिए. Color contrast differentiation. Examination should be demonstrated the capability of the distinguishing the differentiate contrast among the color shade of the gray used in the method as determined by the employer.
This should be conducted upon the initial certification at the 5-year interval thereafter. Vision examination expired on the last day of the month of expiration. So basically color blindness test is very important. Suppose आप कोई ऐसा color shade use करते हैं visual examination में like gray or light gray, dark gray, but you are not able to distinguish, so you are not authorized to do the such type of visual examination. Means whatever color is color contrast use in the any entity method वो आपको properly distinguish करना आना चाहिए. So this is the requirement every 5 years में ये test करना compulsory है. These are the color blindness plates हैं जिसमें टेस्ट कंडक्ट करके देखा जाता है कि whether the color blindness or not. So these are the different color or combination if the candidate is able to read easily, so that we consider कि इसको color blindness test नहीं है. So these tests are conducted initially while do the entity certification. So these templates हैं, different colors आप देख रहे होंगे. ये कॉम्बिनेशन है कलर्स का. तो ये सारे कलर अगर एक आदमी मतलब एक कैंडिडेट्स जो कि एनडीटी करता है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है प्रॉपर्ली रीड करके ये नंबर विद इन 5 सेकंड में आंसर कर पाता है, तो इट मींस उसकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेडियोग्राफी, बिकॉज रेडियोग्राफी जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो वहां पे देयर इज नो कलर, ओनली डार्क और व्हाइट. बेसिकली यू कैन से कि जो कलर डिफरेंस होता है वहां पे शेड में डिफरेंस है, ब्लैक कलर से लेके डार्क ग्रे, लाइट ग्रे. और तो इफ यू आर एबल टू read this number 6 number or different color shade, it means you can do the interpretation of radiograph. Like this we have to distinguish which number is recorded. जैसे 50 number is easily recorded. Near vision acuity test already we say कि J2 chart shall be read by the applicant. So this is the J chart. ये different numbers के chart यहाँ पे बताए गए हैं, J1, J2, J3, वैसे G4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10. तो because यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो it is biller, because actual chart अगर आप देखना चाहेंगे तो A4 में ये चार्ट अवेलेबल है. तो यू टेक ए प्रिंट एंड 300 mm डिस्टेंस से आपको रीड करके देखना है. एटलीस्ट आपको J2 ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है ये चार्ट आपको रीड करना आना चाहिए. देन यू कैन डू द एनडीटी. अदरवाइज इफ यू आर नॉट इन पोजीशन कि आप नहीं बता पा रहे हैं, J2 नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको एनडीटी के लिए सर्टिफाइड नहीं किया जा सकता एज पर द SNTTC 1A और ASME सेक्शन 9 और डिफरेंट जो भी एप्लीकेबल एनडीटी के पर्सनल सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वहां क्लियरली डिफाइन है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है. इवन सम स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट द J1. तो J1 में एटलीस्ट J1 इजीली रीड होना चाहिए. तो ये था बेसिक एनडीटी रिक्वायरमेंट्स सर्टिफिकेशंस के लिए. नाउ विजुअल टेस्टिंग. So visual testing, there are the two basic visual testing techniques, direct visual and indirect, या remote visual testing. Direct visual testing differ from that indirect technique because the inspector is in the presence of the test object within an obstructed view of the test surface. Indirect or remote technique require the boroscopes or remote control camera to view the surface, otherwise inaccessible to the inspector. This is basically direct technique. Direct visual testing is based on the physics. If the path of light between the surface under inspection and the eye of the operator is not interrupted, direct visual testing is done with the unaided eye. Although it may use a mirror or magnifiers to enhance or transmit the image basically. So this is the surface जिस पे हम basically visual inspection करते हैं. It may be welded, casted, forging, or different or other manufacturing process. So we have to find out the
surface imperfection on the surface. So we use the light and do the interpretation or examination with the naked eye. So there is a very important light and eyes, both angle should be equal while we do the visual inspection. The standard mostly define largest distance of the direct visual test as a 24-inch. So if the distance more than 24-inch, so VT, direct VT cannot perform. It is defined in the most of the standard. We can do VT less than 24-inch between object and eyes. The requirement for the use of the optical lights depend upon the viewing angle relative to the surface. Standards such as the ASME boiler pressure vessel code mostly required. Add when this angle is falls under 30 degree. So degree means eye ka access hona on the surface is very important. If the distance between object and eye is more than 300, more than 24-inch, then we cannot do the VT direct method. Or if the angle between eyes or object surface is less than 30, then also VT, direct VT is not permitted. Angle 30 degree से ज़्यादा होना चाहिए ताकि we can directly access on the surface. Next is intensity of the light. Certified VT inspector must therefore have their eyesight tested annually. In addition to near vision acuity, as per SNT TC 1A, the inspector should be tested color contrast, differentiation, including the shade of the gray used in the method, upon the initial certification on every 5 years. Now the intensity of light required on the test object. Sand castings, if the object is made from the sand casting, so 350 lux intensities are required. In service inspection, 540 lux, or weld inspections during manufacturing, 1080 lux intensity should be on the weld. So this is the requirement, means intensity, suitable environment condition, angle between the surface and eye, distance between the eye and object. So these 3 and 4 parameter are very important while do the visual testing of the component. What options are available to the inspector when an impeded direct view is no longer possible because of the remote distance and improper viewing angle or physical barrier? In the situation where the inspector does not have access to place the eye within 24-inch test surface or viewing angle is less than 30 degree, mechanical optical instrument can supplement the eye. So we can use these. This is the indirect or remote visual inspection. We use the cameras or different reflector and interpret the image. If the distance is more than 24-inch and angle is less than 30 degrees. Now, as a visual, while we do the inspection, visual inspection, so it is a requirement we use some tools, measuring tools. For example, we do the weld inspection, so we should know the possible defect on the weld surface. So जो भी defect है वो आपको पहले, it means subject knowledge is very important. Then suitable instrument for the measurement of size of the imperfection also very important. These instruments to most commonly like a welding gauge, feeler gauge and fillet gauge also available, जो कि weld के size और surface imperfections को measure करके decide करते हैं whether it is accepted or not. So selection of the suitable instrument and measurement, method of measurement also very important, is a part of visual inspection. Direct, remote and visual inspection. Many codes refer the direct visual inspection as a visual inspection, which required that the access to the surface to be examined and angle of not less than 30 degree. These are the optical aids. For the indirect method, we use the basically different methods. So यहाँ पे maybe mirror or boroscopies or different methods are available to do the cameras, robotic cameras वगैरह we use.
Advantage of VT. Readily used on the almost all the material, even all NDT methods before doing volumetric or surface, subsurface imperfection, it is important. Key surface should be free from all surface defect. Then if you do the without visual inspection, so it is very difficult to find out taking the judgment whether it is surface defect or volumetric defect. Simple to perform, low in cost, relatively quick result may be permanently recorded, can be automated. Limitation, direct inspections are limited to the surface only. Indirect inspection required greater inspector knowledge and training. Inspector depend knowledge of the material and processing and eyesight. Standards may be difficult to obtain. तो ये था on visual testing and certification requirement for the non-destructive testing and the comparison NDT in engineering and medical field. Now we'll discuss on liquid paint and testing. This is the most commonly used NDT method in engineering. Certification requirement for the liquid paint and testing, level 1, level 2, level 3, there are the 3 certification. तो यहाँ पे level 1 के लिए 4 hours training is required और level 2 के 8. After level 1, 8 hours training is required. If the person is going to direct level 2, 12 hours training is required as per SNTPC manual. Liquid paint and testing, basically PT is a non-destructive testing method that built on the principle of the visual inspection. PT increases the seeability of the small discontinuity that human eye might not be able to detect alone. So you can see there is a one crack, but it may be fine, जो कि हमारी eyes का उतना sensitivity नहीं है, so we cannot see with the naked eye, but after PT we can see easily. So PT increase the seeability of the discontinuity. Liquid paint and test method enhance the visibility of the surface breaking flaws, such as a crack, fissures, crevices, and pores. It can be used very successfully, regardless of component size, and can tolerate the complicated part geometry. Paint and testing use on the metal, such as aluminum. We can use metal, non-metal, all material, but some of the material which react with the penetrant cannot use, like the plastic, rubbers, and powder metal products. So these some products जो कि react करते हैं penetrant material के लिए, तो उनको हम इसके साथ में नहीं यूज करते. Advantage of the penetrant testing, relative easy of use, can be used on the wide range of the material type. Large area, large volume of the part, material can be inspected rapidly and low cost. Part with the complex geometry are routinely inspected. Indications are produced directly on the surface of the part, providing a visual image of the discontinuity. Initial equipment investment is low, or aerosol spray can make equipment very portable. Compared to other NDT, this is basically very, you can apply most of the materials and components. Limitations, discontinuity to be, that is very important, because while we do the paint and testing, we should know कौन से product पे हम कर सकते हैं और क्या क्या limitations हैं. Discontinuity to be detected must be open to the surface and interior free from the foreign material. Only detect the surface breaking defect. So this is the one of the limitations. If discontinuity is not open, means subsurface, in the subsurface, you cannot do the PT test because penetrant cannot enter into the discontinuity and discontinuity cannot be revealed. Second thing, discontinuity is open, but it is filled with the foreign material. Then also it cannot be detected. Now, test surface should not be porous.
जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो देखेंगे कि इट इज अ पोरस मटेरियल और नॉन पोरस मटेरियल. मटेरियल शुड बी नॉन पोरस, required relatively smooth non porous. Pre-cleaning is critical. Contaminants can mask the defect. So surface cleaning is must. Required multiple operation under the controlled condition. While we do the penetrant testing, if one stage you make a mistake in a one stage of the operation, तो आपका पूरा operation, पूरा process ही आपको दोबारा से करना पड़ेगा. तो this is a very controlled technique. Chemical handling and precautions necessary. Toxicity, fire and waste, because the material, जो भी penetrant material है, it is a very highly flammable or toxic. Material under the test must not be susceptible to the damage from the liquid used for the examination. So that should be very important कि जो भी material आप use करेंगे वो पहले देखना है कि whether it is compatible with the material or with the penetrant or not. Post cleaning is necessary to remove the chemicals. Test process has a temperature limit 10 to 50 degrees centigrade. So this is one of the limit. If the temperature of the material is less than 10, we can do less than 10, but we need more dwell time. If it is more than 52 degrees centigrade, the penetrant get evaporated and you will not get the perfect result. A special requirement for the PT material. Penetrant material must be designed with the low sulfur halogen content to avoid the harmful effect on the test part. Stainless steel are especially susceptible to the corrosion when exposed to the chlorine and carbon steel to the surface. Titanium is extremely susceptible to the embeddment when it contact with the halogen. High nickel alloy are also affected by the sulfur and halogen. These harmful chemicals can be found in the penetrant material, but are limited to the 0.1%. I think it is a mistake. It is 1%, but as per the code, that limited 0.1%. तो ये हमें कैसे इंश्योर करना है जब हम पेनेट्रेंट टेस्टिंग करते हैं. तो वी हैव ए MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होगी आपके पास, और बेसिकली व्हाट आर द एलिमेंट्स मिक्स इन द पेनेट्रेंट मटेरियल इंक्लूडिंग developer and solvents or water if we use water. So whatever penetrant material we use in the testing, तो हमको ये इंश्योर करना है कि जो एलिमेंट्स का लिमिटेशन स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अदरवाइज दैट मटेरियल आफ्टर पीटी अगर आपने ये इंश्योर नहीं किया और वो वैल्यू उससे ज्यादा है तो वो कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एज ए क्वालिटी कंसर्न उसको फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे. तो स्पेशली टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, इन सब के केस में हमको ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेशन दी गई है. कॉमन पेनेट्रेंट मटेरियल अटैक द पीवीसी मेकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये सारे जितने भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें कंपेटेबिलिटी नहीं है तो वी कैन नॉट डू द पेनेट्रेंट टेस्टिंग. Sensitivity of the test depend upon the size of the discontinuity opening and not on the length. Crack width is the more important determinant of the penetrant's ability to detect cracks. Tight, narrow crack, regardless of the length, are more difficult for the penetrant to find. Fatigue crack and forging cracks are tighter and require more judicial processing and higher sensitivity penetrant to locate the casting cracks of the same length. The crack limit for the inspection method is approximately half micron crack width. तो basically हम पीटी उसी हमारा जो एम है पीटी करने का वो ये है कि डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दूसरा विड्थ. इफ द विड्थ इज मोर देन 0.5 माइक्रोन, पीटी कैन इजीली डिटेक्ट द डिफेक्ट. Detection of the surface flow depend upon the general condition, finishing of the test surface. Depth of the anticipated defect should be 3 times deeper than the general surface roughness, valley depth. तो अगर सरफेस ज्यादा रफ है और आपको रफनेस पता है तो आपका एम ये होना चाहिए कि एटलीस्ट जो भी डिफेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो वो 3 टाइम of the roughness होंगे, then it can be detected. Otherwise you cannot distinguish between the roughness
the indication formed due to roughness and indication formed due to defect. Although the dye penetrant test is a very easy process, it is also very easy to make a mistake and make the test ineffective. Care must be exercised by the operator in order to perform all the steps of examination accordingly. Basic process of PT: first, surface must be clean. Surface must be dry after cleaning and application of penetrant. Penetrant must hold on the surface up to a certain time. It is called dwell time. So dwell time should be as per the approved procedure. Then after over the dwell time, remove the excess penetrant from the surface and apply the developer. And developer, after application of the developer, give the sufficient time to develop the indication. At least minimum 10 minutes as per the ASME section 5 article 6 के according इसको minimum 10 minutes are required. After 10 minutes or maximum 2 hours. So the developing interpretation time shall not more than 60 minutes. So it is a requirement while you do the interpretation. Intensity of light is very important. If you do the visible penetrant testing, visible light intensity should be 1076 lux on the object surface. तो ये हमें देखना ही है कि इंटरप्रिटेशन के टाइम में जो लाइट इंटेंसिटी, बिकॉज ऑलरेडी वी डिस्कस इन द वीटी आल्सो, कि जब आप वेल्ड और अदर सरफेस का इम्परफेक्शन विजुअल एग्जामिनेशन से करते हैं तो व्हाइट लाइट का इंटेंसिटी सरफेस पे मोर देन 1000 लक्स आर रिक्वायर्ड. इफ द इंटेंसिटी इज as per standard, so you may not miss any indication. After over the developing time, penetrant form an indication on the surface. If it is a red dye penetrant, red indication will be formed on the surface, and white background, because of we use the developer which is white, so you can easily identify the red indication form on the surface. Now we cannot say in the PT के the size of the defect कितना है, depth क्या होगी. Only indication is formed, or based on the indication we decide whether the discontinuity is acceptable or not acceptable. Because standard के अंदर जो acceptance criteria दिया है वहां पे ना तो width of the defect, depth of the defect, length of the defect are not specified, and you cannot detect these information, sizing you cannot do by the PT method. PT only form an indication, and based on the indication size we can decide defect is acceptable, discontinuity is acceptable or not. Indication का जो size होगा वो कई सारे factors पे depend करता है. One is, for example, if the same width same length but depth are different. If suppose एक का डेप्थ पहले वाले के डेप्थ का 50% है या आधा है, तो इंडिकेशन जिसका डेप्थ ज्यादा है, रिजर्वायर इज मोर, तो इंडिकेशन विल बी बिगर. सो साइज ऑफ द इंडिकेशन अगर आप देखेंगे, एक्चुअल साइज ऑफ द इंडिकेशन मींस लेंथ और विड्थ आर सेम बट डेप्थ इज डिफरेंट, तो इंडिकेशन साइज विल बी बिगर देन स्मॉल डेप्थ के जो भी डिफेक्ट होंगे. तो यहाँ पे जो इंडिकेशन का साइज है वो वॉल्यूम या रिजर्वायर ऑफ द डिफेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ आफ्टर द ओवर द टेस्ट पोस्ट क्लीनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. What type of discontinuity can be detected via PT? We can detect all surface, open surface defect, not closed. So this is the limitation. If asked anyone which defect can be identified by using the PT, all open surface defect can be detected by PT. Roll product में we can find out the cracks, seams, laminations. Castings में cold shuts, hot tears, porosity, blowholes, shrinkage. Forging materials में cracks, laps, external burrs, और welds में crack, porosity, undercut, overlap, lack of fusion, etc. Lighting requirement already discussed. Minimum 1076 lux are required for the visible penetrant. जब हम fluorescent penetrant use करते हैं, then we need the black light, या you can say the ultraviolet light,
and intensity of black light should be 1000 microwatt per centimeter square on the test surface. And also it is very important because while we do the fluorescent penetrant testing, background should be, means the environment should be dark. So darkness verification shall be done by the lux meter, or reading of the lux meter should not more than 20 lux. So this is a requirement for the fluorescent penetrant. Choice of the penetrant, because different penetrants are available. So ये depend करता है आप which one you want to select. Penetrant type, there are two types of penetrant. One is called fluorescent penetrant and visible penetrant. Fluorescent penetrant have a fluorescent dye which are visible in the dark area under the fluorescent light. Visible means red color penetrant are available, which can be easily seen in the white light. Method of the penetrant, excess removing of the penetrant from the surface. There are ABCD, यहाँ पे 4 मेथड दिए गए हैं, जिनमें से water washable and solvent removable. These two means A and C, and out of 4, C is the 95%, yeah, you can say 99% method is used in the industry. It is the solvent removable method. But 4 methods are available: water washable, lipophilic post emulsifiable, hydrophilic post emulsifiable. तो post emulsifiable टेक्निक यहाँ पे डिफाइन है. बेसिकली जो सरफेस पे एक्सेस पेनिट्रेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए वी यूज इमल्सिफायर, और इमल्सिफायर डिफ्यूज द पेनिट्रेंट, एंड आफ्टर डिफ्यूजन वी वॉश द पेनिट्रेंट विद द वाटर. So there are two B and C. There are two category post emulsifiable. One is lipophilic, one is hydrophilic. Lipophilic के अंदर एक emulsifier after over the dual time we applied and give sufficient time to diffuse the penetrant. After emulsification time, wash the penetrant with the water. And the post emulsifiable technique, hydrophilic technique के अंदर we emulsifier and water mixed and wash the penetrant from the surface. Now the type of developer, basically there are 4 forms of developer. One is called dye developer, or second category is weight developer. Again, weight category, aqueous and non-aqueous. Aqueous means water based, or non-aqueous basically solvent based. So non-aqueous developer is more sensitive than aqueous developer, which is I think it is most commonly used in the industry. And the weight developer, again aqueous developer, water based soluble and water suspendable. So sensitivity के comparison में it is very less. Even water soluble developer is not suitable for the water washable penetrant, because combination of the both are very, जिसकी वजह से sensitivity are very less. So it is recommended in the ASME section 5 article 6. अगर water washable use करते हैं तो water soluble cannot be used. Now the sensitivity is very important, because while we select the any penetrant, so we should know कि कौन सा penetrant कितना sensitivity देगा. So there are the 5 sensitivity level half, 1, 2, 3, 4. So it is defined on the penetrant material कि ये कितना sensitive है. और sensitive मतलब the smallest defect that can be detected with the higher degree of reliability. तो each and every penetrant material के ऊपर अगर आप देखेंगे वहां पे लेवल डिफाइन होता है, और ये लेवल का मतलब है जैसे लेवल हाफ और 1. तो these penetrant are suitable up to 50 micron depth of the crack. Level 2 it is up to 40, level 3 and up to 20, and level 4 up to 10 micron depth can be detected. So these levels define the sensitivity of the penetrant. Visible versus fluorescent penetrant. Inspection can be performed using the visible light or fluorescent penetrant material. The visible PT is performed under the white light, while the fluorescent PT must be performed using an UV light in a dark area. All are in the level 1 sensitivity range. तो जितने भी पीटी हम करते हैं जिसमें विजिबल यानी रेड कलर वाला डाई यूज करते हैं उसका सेंसिटिविटी लेवल 1 है. मतलब मोर देन 50 माइक्रोन से ज्यादा का कम का अगर आपको डिफेक्ट डिटेक्ट करना है तो
fluorescent penetrant is required. Means we can do the up to 50 micron depth of the crack डिटेक्ट करने के लिए विजिबल पेनिट्रेंट टेस्ट का यूज पेनिट्रेंट का यूज कर सकते हैं. इफ इट इज हाई या यू कैन से अप टू 10 माइक्रोन डिटेक्ट करना है, देन यू नीड द फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट. Fluorescent penetrant more sensitive than visible PT because the eye is more sensitive to bright indication on the dark background. Sensitivity range 1 to 4. तो जितने भी fluorescent penetrant हैं उनकी sensitivity 1 to 4 है, जबकि visible penetrant की sensitivity up to 1 है. Means 50 micron maximum. These based on classification of the penetrant, solvent removable, water washable. जो penetrant को हम solvent से clean करते हैं वो water wash solvent removable कहलाते हैं, जिनको डायरेक्ट पानी से वॉश कर देते हैं वाटर वॉशेबल. पोस्ट इमल्सिव पीपल ऑलरेडी have there are two types. One is लिपोफिलिक, वन इज हाइड्रोफिलिक. दोनों के केस में हमको पानी के साथ वॉश करना होता है. ओनली सॉल्वेंट रिमूवल ऐसा टेक्निक है जिसमें वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज वाटर वॉशेबल रिक्वायर्ड वाटर. अगेन लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक बोथ द पेनिट्रेंट रिक्वायर्ड वाटर. तो जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती एंड वी नीड इंस्टेंट रिजल्ट, तो वी यूज द सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक. Developers are available in the dry powders and different cans available there, so we can mix with the water and the soluble that mixture we can apply on the surface and dry the object, then indication will be formed on the surface. So after application of the water based developer, so it is important that the temperature of the surface should not more than 52 degrees centigrade. Otherwise पेनिट्रेंट जो एंटर किया हुआ डिसकंटिन्यूटी में वो भी ड्राई हो जाएगा और इंडिकेशन विल नॉट बी फॉर्म ऑन द साइड सरफेस. So these are the steps: pre-cleaning, penetrant application, excess penetrant removal, developer application, inspection and evaluation, and post-cleaning. Pre-cleaning, it is must. Without pre-cleaning, we cannot do any penetrant testing because surface may be marks of the contaminants or dust or impurities. So pre-cleaning is very critical, and dry of the object is very important. Application of the penetrant means we can apply by brush, dipping, immersion, flow on, any method we can use for application of the developer. Dwell time is critical. It is because if you give the more time and give the less time, दोनों ही important है. Whatever the time defined in the procedure you have to follow, because procedure approved procedure में जो time defined है based on demonstration है. So we cannot reduce the time defined in the approved procedure, and also we cannot increase the time because the time is defined in the procedure is maximum 2 hours as per the ASME section 5 article 6. If you give the more time, penetrant will be more dense, and density बढ़ने से you can say कि viscosity will increase and capillary action get shallow. So it is very important the time defined है maximum or minimum, we have to follow the same. Removal of the penetrant, solvent, water washable and post emulsifiable techniques. So water washable में we can wash the penetrant directly with the water, but the temperature and pressure should not be 40 psi. The pressure shall not more than 50 psi. And temperature 100 degree Fahrenheit. Solvent removal method is very important while we clean the surface. Basically, we cannot use directly solvent on the surface. Motion cloth with the solvent we have to use to remove the excess penetrant from the surface. It is prohibited application of the solvent on the surface before means over the test. Post emulsifiable, already I explained it is a technique जहाँ पे हम एक emulsifier use करते हैं और certain time means emulsification time is provided ताकि जो surface पे excess penetrant है वो diffuse हो जाए. Developer application is a very important. Developer application, dry developer को direct dust कर देते हैं weight के ऊपर. We have to apply the वेट में 2 तरह का है. वेट मींस वाटर बेस्ड है तो अप्लाई करने के बाद उसको
बेसिकली हॉट सर्कुलेशन चैम्बर में रख के ड्राई करते हैं। और नॉन एक्वस में immediately you will get, because the non aqueous get evaporated immediately and in get evaporation होने की वजह से सरफेस के ऊपर एक यूनिफॉर्म पाउडर की कोटिंग बन जाएगी and that develop the indication immediately. So it is faster and give the good results. So this is the step developer application or all. It is very important why you find out the very fine defect. Developer coating is plays a very essential role, because if you apply the high thickness of the developer, so fine defect you could not fine defect will not indication of the fine defect will not form on the surface. Why? Because the reservoir is very less and the penetrant will not basically form the indication on the surface. So it is very important, जब आपको एकदम फाइन क्रैक जैसे कि फटीग क्रैक्स वगैरह डिफेक्ट डिटेक्ट करने हैं, इन सर्विस डिफेक्ट, तो कोटिंग थिकनेस शुड बी वेरी थिन. इंडिकेशन विजिबल पेनिट्रेंट में रेड कलर इंडिकेशन आपको दिखेंगे, फ्लोरेसेंट में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर अंडर यूवी लाइट. अगेन रिपोर्टिंग and post cleaning is very important, because it is a chemical which will react with the material and maybe determinantal effect on the surface. Now verification of the penetrant system. Penetrant system basically sensitivity is very important. So there are two methods. One is quenched cracked aluminum block and one is nickel chrome cracked panel, which is available in the market. We have to verify whether the sensitivity, whatever the defined under the conditions, उतना है या नहीं है. So we can verify it with the comparator block, which is called the quenched cracked block. कई बार हम अलग अलग टेम्परेचर पे करते हैं. Suppose we want to do the testing less than 10 degree or more than 52 degree, then we can use the quenched cracked aluminum block. 50% पे जो टेम्परेचर अलग रखेंगे, दूसरे 50% पे टेम्परेचर अलग करेंगे, और देन वी कैन कंपेयर द रिजल्ट. नाउ दिस इज द निकल क्रोम cracked panel, which are available 10 micron, 20, 30 and 50 microns में these are the available. So whatever the we want to check the sensitivity of the penetrant, so that suppose आप visible penetrant की sensitivity check करना whether the 50 micron or not, so we have to buy these panel from the market and apply this system on the same panel. So if the indications are invisible, it means your system can detect the 50 micron depth of the crack. Now the penetrant testing is one of the most widely used non-destructive testing method. It is popularity can be attributed in the two main factors, which are its relatively easy use and its flexibility. It involve a number of processing steps that must be closely controlled to achieve the optimum sensitivity. So I think we काफी कुछ हमने पीटी में कवर कर लिया है, because time is very short, so we cannot discuss on the all NDT methods. So this was the PT. Now RT film interpretation is a very important for the inspector, जो कि फील्ड में फिल्म इंटरप्रेट करते हैं. तो दिस इज फॉर RT film interpretation. तो एज ए इंस्पेक्टर सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सपोज आप वेल्ड का इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, तो आपको वेल्ड के जो इम्परफेक्शंस हैं वो पता होने चाहिए, और कौन से सरफेस वाले हैं, कौन से वॉल्यूम में होते हैं, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर आपको ये पता है कि इसमें दीज इम्परफेक्शन हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसी एंगल से देखेंगे, और जो रिकॉर्डेड डिफेक्ट होंगे वो आपको समझ आएंगे कि ये कौन सा डिफेक्ट है. तो डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे, तो बेसिकली एक रिवर है और स्टोन्स है आजू बाजू, और पीछे आपके कुछ पेड्स वगैरह दिख रहे होंगे. तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने फेस हैं, तो इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप थोड़ी इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत सारे फेसेस इसमें दिख जाएंगे. तो डिटेक्टेबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेस क्यों पूछा? बिकॉज ऐसे ही जब हम एनडीटी
जब हम वेल्ड का इम्परफेक्शन करेंगे तो उसमें कौन कौन से डिफेक्ट हैं उस एंगल से हम देखेंगे और हमें पता लगेगा कि उसमें कौन से मोस्ट प्रोबेबल डिफेक्ट है। परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये इमेज है आपके सामने, यहाँ पे दो फेसेस भी हैं और एक ग्लास भी है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज वन ऑफ द इमेज जिसमें आपका परसेप्शन डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टॉर्टेड इमेज, तो वी शुड नो कि कौन सी इमेज डिस्टॉर्टेड है और कहाँ से है, तो ये डिस्टिंग्विश करना हमको आना ही चाहिए। यहाँ पे देखेंगे डिस्टॉर्टेड इमेज आपके सामने है। इल्यूजन very important, जब when you do the radiography it is very important. Color combination also very important because gray and already I explained, dark gray, light gray, black, इन सब में distinguish होना must है। और image combination also very important कि यहाँ पे ये image इस तरह से होगी। तो now while we do the interpretation of radiograph, basically very important to check the density of the radiograph. If the density is not within the range specified, generally 2 to 4 for the gamma rays or 1.8 to 4 X-ray, इस रेंज में होना मस्ट है। अब डेंसिटी को डेंसिटी रेंज वेरिफिकेशन के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि यू मस्ट हैव अ कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड डेंसिटोमीटर। तो डिफरेंट डेंसिटोमीटर्स आर अवेलेबल, so we have to verify the density with the use of densitometer. And again, densitometer is a calibration is yearly basis or every 3 months, sorry, as per the standard means SME section 5 article 2, densitometer calibration shall be done every 3 months. And again, densitometer shall be calibrated every day, every shift, every 8 hours agar continue you are doing radiograph interpretation, so you have to verify the calibration with the step wedge comparison film that should be calibrated. तो ये आपके सामने स्टेप वेज कैलिब्रेशन फिल्म है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स हैं और उस कलर का क्या डेंसिटी लेवल है विच इज डिफाइंड इन द बॉटम। 0, it is a transparent, so 0, and then it is a very light gray, dark gray, so shade is increased, means contrast, you can say ki towards black side, so density level is increases. So before interpretation you have to verify whether the density in the range, and density verification के लिए calibrated densitometer is required. For daily calibration check, step wedge is required. So these are the basically shades ताकि we can distinguish between the shades. Now if the density is within range, now we have to verify the sensitivity of the radiograph. If the sensitivity is not recorded, then radiograph is not accepted. Accordingly, if the density is not within range, then also radiograph is not accepted for interpretation. So sensitivity ensure करने के लिए we have a tool called IQI, image quality indicator. तो image quality indicator are whole type and wire type, दो तरह के available हैं। तो ASTM में दो तरह के हैं, whole type और wire type, and ISO में wire types are available. उसमें 3 सेट होते हैं, इसमें 4 सेट्स हैं, सेट ABCD. Based on thickness we select the set, और उस सेट में different diameters के वायर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 2 टेबल नंबर 276 के हिसाब से, बेस्ड ऑन द थिकनेस रेंज ऑफ द वेल्ड, वी हैव टू फाइंड आउट विच वायर शुड बी विजिबल ऑन द रेडियोग्राफ। मतलब इमेज ऑफ द वायर उसका फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होना मस्ट है। देन अगर वो इमेज आप जो भी थिकनेस के हिसाब से वायर आता है, वो अगर वायर का इमेज फिल्म पे आता है, रिकॉर्ड हो जाता है, it means sensitivity achieved. So some of the standards like ISO talks about the sensitivity requirement 2%. 2% means job thickness का 2% करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगी उतने mm का वायर का डायमीटर का इमेज फिल्म पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो दिख जाता है, it means image is recorded on the film 2% of the job thickness, it means sensitivity is achieved.
If it is not meeting this requirement, so again re-radiography or reshoot is required. This is a whole type IQI. Whole type IQI are available in the different thickness. And how you identify the thickness? This is the number is mentioned on the, basically it is a lead letter placed on a strip which is made in the basically different materials. तो ये स्टील का है, इट इज अ रेक्टेंगल शेप, इसके ऊपर ये है, जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये नंबर आपको ये प्रेजेंट ये बताएगा कि ये कितने थिकनेस का है. तो 40 मतलब इट इज अ 40 मिली इंच. और the diameter of the hole, 3 holes are in the IQI. One is 1T, 2T and 4T. So diameter of the 1T, it is the between 2T and 4T is equal to thickness of the strip. तो 40 मिली इंच का है, तो ये 40 इंच का डायमीटर इसके सेंटर में है. ये डबल मींस 80 और ये 4 टाइम 160 मिली इंच. तो ये दिस इज द मेथड. होल का और थिकनेस का रिलेशन इसमें इस तरह से है. हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये कौन से मटेरियल का है? तो different material have a different notches. It is given in the section 5 article 2. इधर पे किसी के one side में नॉच है, किसी के 2 साइड में है. तो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मेथोडोलॉजी डिफाइन की गई है, जहां पे हम इमेज देख के बता पाते हैं कि कौन से मटेरियल का IQI लगाया गया है. इट इज आल्सो इसेंशियल कि जिस मटेरियल का आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसी का IQI होना मस्ट है. सेम मटेरियल और लाइटर मटेरियल, नॉट हेवी देन द मटेरियल बीइंग रेडियोग्राफ. बेसिकली कोई डाउट है तो यू कैन डू द रीशूट. नाउ एज ए इंस्पेक्टर इट इज इम्पोर्टेंट आपको एनडीटी के टेक्निक्स मींस रेडियोग्राफी जो मेथड्स हैं वो भी पता होना चाहिए. तो डबल सिंगल वॉल सिंगल इमेज टेक्निक, डबल वॉल सिंगल इमेज जो कि आपके सामने है. तो बेसिकली इसमें रेडिएशन 2 वॉल से पास होती है और नीचे जो बॉटम साइड में रखा है प्लेस किया हुआ फिल्म है उस साइड का इमेज उसमें रिकॉर्ड होता है. तो इट इज कॉल्ड डबल वॉल डबल इमेज टेक्निक. दिस इज डबल वॉल डबल इमेज, sorry, double wall single image technique, और this is double wall double image technique. ये भी 2 तरह का होता है. one is called elliptical, one is called the superimpose technique. इसमें टॉप एंड बॉटम दोनों इमेज एक ही फिल्म पे रिकॉर्ड होते हैं, दोनों वॉल के इमेज. डबल वॉल डबल इमेज सुपर इम्पोज में दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने की वजह से वहां पे डिफिकल्ट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से सरफेस में वो इम्परफेक्शन है. दिस इज सिंगल वॉल सिंगल इमेज टेक्निक. रेडियोग्राफ थिक फिल्म बेसिकली में एक पॉलिस्टर बेस्ड फिल्म होती है जिसके बोथ साइड में सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर की जाती है ताकि स्क्रैचेस वगैरह से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. फिल्म प्रोसेसिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब फिल्म को प्रोसेस करेंगे तो उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह हैं वो सरफेस में कोई भी इम्परफेक्शंस ड्यू टू केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए. नाउ दिस इज ए रेडियोग्राफ, शूटेड रेडियोग्राफ, जिसमें ये इमेज IQI का इमेज है और दिस इज द स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म. तो वी हैव टू वेरीफाई द डेंसिटी विद द डेंसिटोमीटर. This is the densitometer or step weight film. तो we can compare the density with this film. तो अगर आप देखेंगे ये और इसके साथ में ये मैच होता है तो it is 0.3 और requirement is 1.8. तो based on the standard requirement it is not acceptable. While you do the interpretation of welding, so you should know the कौन से welding defect, कौन से welding process में कौन से defect हो सकते हैं. तो कुछ specific welding process हैं जिसमें कि जैसे कि SMAW, FCAW, SAW, जिसमें स्लैग ड्यूरिंग वेल्डिंग स्लैग फॉर्म होता है और वेल्डिंग के अंदर स्लैग होने के चांसेस हैं. जबकि जैसे GTAW उस वेल्डिंग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है और वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्ड में इंटरप्ट हो सकता है ड्यूरिंग वेल्डिंग. तो टंगस्टन इंक्लूजन ओनली GTAW में पॉसिबल है और स्लैग इंक्लूजन ओनली SMAW, FCAW और SAW में होने का चांसेस है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वेल्डिंग प्रोसेस पता होगा, देन वी कैन डू द बेटर इंटरप्रिटेशन. और डिजाइन ऑफ द ग्रूव आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the design of the right.
नाउ द इमेज ऑफ द रेडियोग्राफ जब हम शूट करते हैं कैसा दिखता है, तो जैसे पोरोसिटी है तो टाइप ऑफ पोरोसिटी हमें पता होना चाहिए, तो क्लस्टर पोरोसिटी, उसके बाद इलोंगेटेड पोरोसिटी एंड इंडिविजुअल पोर्स, तो वी नो द अबाउट द पोरोसिटी इंडिकेशन कैसे दिखेंगे। तो नाउ दिस इज द रेडियोग्राफ, यहाँ पे आपके सामने ये पोरोसिटी के इंडिकेशंस हैं। तो ये वेल्ड एरिया है, वेल्ड में हमको देखना है कि पोरोसिटी कैसा दिखता है। तो अगर आप ये देखेंगे राउंडेड और इलिप्टिकल शेप में आपको पोरोसिटी दिखेगी। ये यहाँ पे इसकी लार्ज इमेज दिखाई गई है जिसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये ब्लैक स्पॉट्स जो पोरोसिटी के हैं, और ब्लैक क्यों बने हैं, बिकॉज एयर इंटरप्टेड इन द वेल मटेरियल, थिकनेस लॉस, और जहाँ पे थिकनेस लॉस होने की वजह से जब रेडिएशन पास फ्रॉम द पोरोसिटी, वहां पे जहाँ पे पोरोसिटी था वहां पे रेडियोग्राफिक इफेक्ट ज्यादा होगा फिल्म पे, दैट बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन इंडिकेशन will be dark. This is the double wall double image superimposed technique. These are the porosity, cluster porosity. ये अलाइंड रूट पास पोरोसिटी। कई बार क्या होता है फर्स्ट पास में ड्यू टू द मॉइस्चर और मेटल, जिस मेटल को हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर होने की वजह से जो रूट पास में या फिर इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर की वजह से आपको ये सेंटर में एक लाइन में कंटिन्यूसली ब्लैक कलर के जो इंडिकेशन है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रूट पास अलाइन पोरोसिटी। दिस इज सुपर इम्पोज टेक्निक, डबल वॉल डबल इमेज। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम दोनों में पोरोसिटी है, बट इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस में कम है और किस में ज्यादा है। दिस इज आल्सो डबल वॉल डबल इमेज टेक्निक, सुपर इम्पोज अलाइन पोरोसिटी। हॉलो बीट पोरोसिटी, इसमें जस्ट रूट में ये मैक्सिमम चांस होता है जहां पे आपको लेंथ में इंडिकेशन दिखेंगे लाइक ए स्लैग, बट बिकॉज इज द सेंटर of the weld and root pass, we can identify it is a blue hole. Incomplete fusion. Incomplete fusion between weld and parent metal or weld to metal, that may be in the root, it may be on the capping and interpass anywhere. Indication of incomplete fusion आपको इस तरह का दिखेगा। This one, it is difficult to identify. One of the important कि अगर आपको lack of fusion ढूंढना है तो radiography is not suitable method. उसके लिए ultrasonic testing is suitable entity methods है. This is the lack of fusion. This is also incomplete penetration. It is the root defect basically. वेल्ड के सेंटर में आपको ये ब्लैक लाइन दिखेगी जो कि शार्प होगी। जितना एरिया पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज द लैक ऑफ पेनिट्रेशन। दिस वन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन फ्रॉम वन साइड, कई बार मिसमैच होने की वजह से लो एक ऊपर और नीचे मींस अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, देन वन साइड से लैक ऑफ फ्यूजन लैक ऑफ पेनिट्रेशन होने के चांसेस हैं। दिस इज द क्रैक, different types of crack surface and weld transfer longitudinal, so this is the transverse crack. So indication are very fine or zigzag दिखेगा across the weld, it is called transverse crack. These are the images of transverse cracks. This is transverse cracks. Again longitudinal crack, it is very difficult to identify by the radiography. As per the ASME section 5 article 1 के हिसाब से cracks may not be detected with the radiography if the sensitivity या depth of the crack is less than sensitivity of the radiograph. So best method to detect the crack is magnetic particle testing and penetrant testing or eddy current testing. These three methods are more, and acoustic emission testing also. These are the longitudinal cracks. Slag inclusion, ये irregular shape में कहीं भी हो सकता है, ये रूट में है। इंटरपास slag, burn through because of the metal is melt, जो रूट में जब सबसे पहले रूट पास हम यूज करते हैं, because of the high temperature metal get melted और burn,
और वहां से ड्रॉप होके रूट से गिर जाता है, तो इस तरह का डिफेक्ट आपको दिखेंगे, इट इज कॉल्ड रूट कनकेविटी। रूट कनकेविटी बेसिकली एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि मेटल तो यहाँ से ड्रॉप नहीं होता, बट बिकॉज यहाँ पे कैपिंग होना चाहिए, जैसे कि सरफेस में कैप बना है, तो यहाँ पे सक बैक होने की वजह से मेटल कन्वेक्स शेप में रह जाता है। दिस इज कॉल्ड द रूट कनकेविटी। कनकेव शेप में रह जाता है, दिस इज कॉल्ड रूट कनकेविटी। ये रूट अंडरकट, एक्सटर्नल अंडरकट में भी रूट अंडरकट और कैपिंग अंडरकट, तो पैरेलल टू द वन नेल की तरह मार्क्स दिखेंगे रूट में, या फिर इधर कैप के पैरेलल में, तो इट इज एक्सटर्नल अंडरकट लाइक दिस। दिस इज more dense area, it means it is external undercut. Excessive penetration, metal is more penetrated, so generally it is a root associated defect. इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे density is very less, it shows कि यहाँ पे thickness is increased, so it is excess penetration. Lack of fill, material कैपिंग ठीक से फिल नहीं किया, तो वी कैन आइडेंटिफाई यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक नहीं है, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंप्लीटली फिल नहीं किया गया। तो ये मोस्ट कॉमनली वेल्ड इम्परफेक्शंस है, जिसको हम रेडियोग्राफ में किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, तो सेशन इज यहाँ पे एंड करते हैं। नाउ किसी का कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं, अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन। हेलो, Yes, sir. Yes, good afternoon, Abdul ji. गुड आफ्टरनून साहब, कैसे हैं? I have one question under this the visual testing. If बताइए। a person is using the magnification glass or the microscope, so it will come under the direct visual inspection or indirect, because he taking the help of this auxiliary equipment. Please. Yeah, as per the code, it is permitted. You can use the magnifying glass or मतलब mirror also to convert the, means suppose sometime it is not accessible, तो mirror और magnifying को direct में रखा है। Other than this, like आप कोई ऐसा ऐड यूज करते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करके आप दूसरी जगह ले रहे हो, मशीन के थ्रू मैग्नीफाई कर रहे हो, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। Okay, so microscope will also come under this direct inspection. या वो मैग्नीफाई कर रहा है तो दैट इज डायरेक्ट। नहीं, वो वहां पे फिर अगेन इमेज मैग्नीफाई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप आप कौन सा यूज कर रहे हो? जैसे कहीं पे ट्विस्ट करके फिर अगेन इमेज, कहीं आपने इमेज देखा था मेरा जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता हो बीच में, डायरेक्ट विजुअल आईज के बीच में और उसके बीच में, राइट? अगर हम उसको इमेज को मॉडिफाई करके सिग्नल को कन्वर्ट करके कहीं पे ले रहे हैं, we can say that if we are using डायरेक्ट the transducer, means it will come under the indirect inspection. करेक्ट ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हो, देन इट इज इनडायरेक्ट मेथड। Right. The second question is in same category. This visual inspection is if the person is not able to see the J2 chart, okay, which is the requirement, राइट, and now he's going to adhere this glass or Google's, and now he's fit for to see this J2 chart. Okay, so how as a verifier or the examiner, we will check the integrity that the person who have qualified by this Google's is really wearing the same glass. That is the question. The integrity, some integrity may be received in this. करेक्ट सुरेंद्र जी, एज ए टीपीआई, एज ए इंस्पेक्टर, ये तो बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट एनुअली, राइट? पहली कंडीशन तो ये है, तो साल में चेक करना है। तो अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो J2 चार्ट हमको मिनिमम रीड करना आना ही चाहिए। अब सवाल है कि वो जो ग्लास वियर कर रहा है वो सुटेबल है या नहीं है। आपके बोलने का मतलब ये था कि उससे J2 कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको डाउट है तो आपके पास चार्ट अवेलेबल होना चाहिए, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर
डेफिनेटली आप ग्लास वियर करके अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेट आपको अथॉरिटी नहीं है विजुअल इंस्पेक्शन करने की, मतलब आप रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। Right, right. And the third and the last question is in this PT. Actually, the application of the developer is the critical activity. So how we can control this layers of the developer through the the thickness of the Zoom पे coating or the only the through the Hello? visual expertise. करेक्ट। तो देखिए थिकनेस ऑफ द डेवलपर कोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड, अगर आपने एक्सेसिव थिकनेस अप्लाई कर दी तो जो बहुत फाइन डिफेक्ट थे जिनका रिजर्वायर बहुत कम था, तो जब रिवर्स कैपिलरी में वो पेनिट्रेंट डिफेक्ट से बाहर आके इंडिकेशन फॉर्म करेगा, तो बिकॉज द हाई थिकनेस या थिकनेस ज्यादा होने की वजह से तो जो वॉल्यूम It के can be अंदर skipped. Yes. पेनिट्रेंट था वो बाहर आ ही नहीं पाएगा और डिफेक्ट कैन नॉट Skip बी हो जाएगा. फॉर्म। ठीक है। और अगर इसका उल्टा भी है, So अगर आपने डेवलपर कोटिंग थिकनेस बहुत कम की और वो उतना डेवलपिंग एक्शन ही नहीं कर पा रहा सरफेस पे, तो डिफेक्ट होते हुए भी फॉर्म नहीं करेगा। तो बेसिकली इट इज ए स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, जब आप डेवलपर अप्लाई करते हो तो बैकग्राउंड जो कलर है उसका वो एटलीस्ट कवर्ड शेड कवर्ड हो जाना चाहिए, उतना थिकनेस मिनिमम अप्लाई करना है, राइट। अब उसमें डिपेंड करता है कि ये आप कौन सा मेथड अप्लाई किया, मतलब कौन से टाइप का डेवलपर अप्लाई किया। अब अगर आप वाटर बेस्ड ले रहे हैं तो आपके पास कोई मेथड नहीं है वो कोटिंग थिकनेस को बहुत ज्यादा कम ज्यादा करने के लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट है नॉन एक्वस मेथड। तो नॉन एक्वस में जैसे आपने स्प्रे किया सरफेस पे, और स्प्रे करने से पहले इट इज मस्ट इट शुड बी प्रॉपरली शेक्ड, मिक्सचर ऑफ द डेवलप पाउडर एंड सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको पहले अच्छे से शेक कर लेंगे, तब अप्लाई करेंगे, और एक लेयर अप्लाई करने के बाद उसको ड्राई होने देंगे। तो अगर आपको लगता है कि उसकी बैकग्राउंड पूरी तरह से कवर्ड हो गई है तो दैट इज सफिशिएंट, और अगर नीड तो फिर यू कैन अप्लाई वन मोर स्प्रे। तो सफिशिएंट बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द फाइन सर्फेस डिफेक्ट। okay, so I think we can verify through the visual inspection that the background should be visible whenever we are verifying that the proper developing coating is applied by the manufacturer, the contractor. Right. Thank you. Thank you. So, ओके, एनीवन? हेलो? Anyone else want to ask any question? चलिए फिर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। सुषमा, ओवर टू यू। Yes, sir. Thank Hello. you so much. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So my compliments to Afzal sir. Very detailed discussion on the NDT, and he covered right from medical to industrial and engineering, and he emphasized quite a lot on competence requirement, which is most important. My question was related to few things which advanced technology what they use is a real-time X-ray. Nowadays, that is being used more mainly in production area. Then in underwater also, we use the hydro ecosystem. Is he aware of that one? And if we can put little light on these two. And third one is about the eddy current. Eddy current was widely used earlier, but now is slowly with ultrasound, which is the state of art and latest technology with soft
software supported. So these are the three basic things I would like to know from our expert, Afzal sir. Back to you. Okay, sir. Eddy current testing basically, sir, is a limited key. We can do only conductive material, right? So it is very important. We cannot do the on non-conductive material, or eddy current used for the detection of the fine surface defect, not subsurface and volumetric defect. तो eddy current testing में पहले तो हमें ये जानना है कि डिफेक्ट हम कौन सा डिटेक्ट करें, देन वी कैन सेलेक्ट लाइक ट्यूब्स है, हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स. तो वहां पे इट इज वेरी मोस्ट कॉमनली अनसुटेबल एनडीटी मेथड बिकॉज एरिया इज वेरी लिमिटेड. तो यहाँ पे प्रोब आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है उस ट्यूब के इंटरनल इंस्पेक्शन करने के केस में. एडी करंट टेस्ट से हम वहां पे इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, दोनों स्टेज में डिफेक्ट इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं. इवन सरफेस, आउटर सरफेस का प्रोब अलग होता है, उसमें भी हम आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं. ओनली दैट बिकॉज लिमिटेशन है कि कंडक्टिविटी एंड डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट, तो वहां एक लिमिटेशन आ जाती है. नाउ जो एडवांस एनडीटी मेथड्स हैं, एनडीटी मेथड्स में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में, और डिजिटल रेडियोग्राफी हो गया, टोमोग्राफी हो गया. तो दीज आर द एडवांस एनडीटी मेथड्स इन रेडियोग्राफी. तो बट बिकॉज द सेटअप इज सॉफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली है और एडिशनल कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड, एंड बट रिजल्ट्स आर वेरी गुड, इंस्टेंट रिजल्ट. बिकॉज जो ओल्ड मेथड था रेडियोग्राफी का, उसमें आपको फिल्म लेना है, शूट करना है, फिर डेवलप करना है, डेवलपिंग के बाद ड्राई करना है, देन उसके बाद वी कैन डू द इंटरप्रिटेशन. इट्स टेक मोर टाइम. बट डिजिटल रेडियोग्राफी में उधर आपने जस्ट या यू कैन से कि इधर जस्ट इधर एक्सरे या रेडियोग्राफी सोर्स वट एवर यू हैव यूज, तो it convert into the digital image and we can see the image on the radiograph. तो टोमोग्राफी में we can move the object and take a different angle पे रेडियोग्राफ लेके, and it is software based, it is convert the image and show the 3D picture of the defect. तो it is a very fraction of second में हम उसका पूरा डिटेल इमेजिंग कर सकते हैं टोमोग्राफी वगैरह. तो इट इज एडवांस वर्जन डिजिटल रेडियोग्राफी. एंड अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो हम कन्वेंशनली यूज करते हैं, जस्ट ए स्कैन प्रेजेंटेशन, जिसमें हम जस्ट सिग्नल देख के बताते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाते. नाउ वी हैव एडवांस मशीन जो कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको इमेज को एवॉल्वेट करके और सामने डिजिटल इमेज आपको दिखाती है, लाइक फेज आरे, TOFD और वन मोर गाइड वेव्स. तो दीज आर द एडवांस एनडीटी मेथड जिसमें हम इमीडिएटली और मोर एक्यूरेटली डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. इवन ऐसे डिफेक्ट जो कि बाकी एनडीटी मेथड से मिस हो सकते हैं, वो आसानी से अल्ट्रासोनिक एडवांस एनडीटी मेथड से डिटेक्ट किए जा सकते हैं. बाकी अगर कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे, तो बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक एनडीटी लेवल 2 इज मस्ट फॉर द advanced entity method. Again 15 days का training as per ASME section 5 article 1 के according they have defined minimum training hours for the advanced entity method. तो जिसमें phased आ रहे हैं और TOFD methods है, तो these are the advanced entity method जिसमें 15 days का training minimum देना होता है after ये normal जो entity level 2 होता है. तो competency तो requirement है because machine में advanced features हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू तमाम रिजल्ट्स हम एवॉल्वेट करते हैं. आई थिंक Afzal ji, I have one more question on RT. Are you hearing me? बोलिए. Afzal ji, are you hearing me? यस यस Sir, हाँ, my question is, by which code we can bound to the manufacturer of the contactor that the IQI, the thinnest wire, shall be in the extreme left side of the film, thinnest wire. So by which requirement we can bound to the contactor? it is defined by the basically end user. Code is a flexible. Code से कि 2% sensitivity होनी चाहिए. You can use hole type, wire type, ISO, ASTM, any design. But it is if it is defined in the specific specification of the client, same shall be followed. अगर आप ASME की बात करेंगे तो वो दोनों को परमिट करता है.
You can use hole type, you can use wire type, anyone. No, no. My question was if I'm going to use this wire type IQI, there is Hmm. a 5-6 wire is there from thinnest to the thicker. Okay. Hmm. So as per the best practice, the thinnest wire shall be in the extreme left of the film, extreme left. So by which code or by which requirement I will ask to the vendor or the contractor that you are going in the right manner or in the incorrect manner. That's the question. तो यू आर टॉकिंग, देखिए नहीं अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, मतलब आप जो I'm saying if I'm using a IQI wire type, okay. So there is a 5-6 wire is there. सिक्स वायर इन Thin सेट, wire देखिए to the 4 सेट, thicker अगर मैं wire. एसटीएम की बात करूं तो 4 सेट हैं, ए बी सी डी, एक सेट में 6 वायर हैं और हर एक वायर का डायमीटर जी. अलग अलग है। बोलिए। हाँ, जो छोटे वाला डायमीटर है, जो थिनर वायर है, थिनर बेस्ट वायर प्रैक्टिस सेट के ए में हिसाब है, से करेक्ट। लेफ्ट तो साइड में इसका होना चाहिए. करेक्ट करेक्ट, तो आप बात कर रहे हैं कि वो चेक करना है कि ये कौन से कैसे बनाया गया है, ऐसा। तो हाउ यू चेक, हाउ यू मेरा क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर ने उसको उल्टा लगा दिया, मतलब थिकर वायर उसने एक्सट्रीम लेफ्ट ले गया, तो मैं किस कोड के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसको बोलूंगा कि ये गलत किया आपने. दैट्स द क्वेश्चन. ओके ओके, मतलब प्लेसमेंट ऑफ आईक्यूआई ऑन द ड्यूरिंग रेडियोग्राफी ऑन द आईक्यूआई, मतलब ऑन द रेडियोग्राफ के कहाँ पे लिखा है कि थिनर वायर जो है वो राइट साइड में होना चाहिए, ये बोल रहे हो? यस. यस, तो उसने बेसिकली लेफ्ट कोड साइड में में ऐसा नहीं आईक्यूआई लिखा, पास किया. दैट इज द कोड रिक्वायरमेंट ऑफ एएसएमई. करेक्ट, तो कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि जो वायर आप या जो भी आईक्यूआई आपने यूज किया है, तो आईक्यूआई का प्लेसमेंट वर्स्ट केस में होना चाहिए, वर्स्ट केस में होना चाहिए। मतलब वर्स्ट केस कौन सा होगा? जो कि दोनों एंड पे है, जितना सेंटर से एकदम स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो एकदम फेवरेबल कंडीशन है, राइट? मतलब जो सोर्स और आईक्यूआई का अलाइनमेंट सेम है, इट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। और जितना किसी प्रोजेक्टेड डिस्टेंस में ज्यादा होगा, जैसे एंड है तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम आईक्यूआई रखते हैं तो फिल्म पे जब उसका प्रोजेक्शन जाएगा तो वो इमेज ज्यादा बिलर बनेगी। क्लियर? अगर बिलर इमेज दिख सकती है तो जो सेंटर में फेवरेबल कंडीशन है वहां पे वो इमेज बेटर दिखेगी, ज्यादा शार्प दिखेगी। इसलिए आईक्यूआई जो भी एसेंशियल वायर है, इट शुड बी अनफेवरेबल लोकेशन। क्लियर? ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है कि ये बाहर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल करके दिया है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि अफजल जी, हाँ जी अफजल जी मेरे को एक चीज बताइए, मैं सुनील खन्ना बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे को एक चीज ये बताइए कि जो एनडीटी टेक्निक्स हैं, nowadays we are applying it to the metallic parts. जी Can it be applied to the non-metallic parts also? Because Yes, sir. nowadays Yeah, FRP yeah. is replacing. We can do ultrasonic testing, you can do on all the FRP materials, and industry use नहीं, bonding को check ultrasonic करते हैं। sound also this whether it has been developed for the FRP pipes. बट इट इज बेसिकली अभी तक जो कोड हमने देखे हैं एफआरपी के लिए उसमें कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया, बट जो लेमिनेटेड यानी जो नॉन मेटेलिक मटेरियल से बनाए गए वेसल्स हैं वहां पे डिफाइन किया गया है कि उनकी बॉन्डिंग बराबर है क्या नहीं, तो हम वहां पे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करके उनका बॉन्डिंग लेमिनेशन चेक करते हैं। क्लियर? Exactly. That's what I'm trying to say. कि भाई whenever we are having this, the welding can also come not only in the metal but also in the non-metal also. So whether this is being applicable and Yes. being developed for them UT. also, or some other UT. thing is there. UT mostly use UT. Right. Thank you, sir. अफजल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या मानकर हाँ। साहब बोलिए। हाँ, मेरे साथ मेरा एक कलीग है युवान करके, एक्चुअली ही इज बेसिकली टीपीआई, he has one query, he will ask you. Okay, बताइए। please. Sir, good morning, sir. Sir, I am just a NTT completer, sir, NTT level 2. Okay. I have one doubt from UT, sir. बताइए। Sir, how to calculate the angle, sir? Because we are using 70-degree angle, 60-degree, 45-degree, it depends on thickness. Okay. How do we will find out this angle, sir? Basically, how to select the angle of the probe, जब आप select, selection of the angle, right? Yes, sir. Basically, पहले आपको ये जानना है कि जो defect you want to find out in the well,
तो कौन से ओरिएंटेशन में है? सपोज योर ग्रूव एंगल ऑफ द वेल ज्योमेट्री इज 35 डिग्री, राइट? Okay, sir. 35, 37. So which angle, if you want to find out the lack of fusion, so which Okay. angle give the more reflection if lack of fusion in the well? So if it is a sound, you can say ki projected at 90 degree, you will get the good result, good reflection, right? Okay. मीन्स तो 35 से अगर आपको बेटर रिफ्लेक्शन चाहिए तो ऐसा एंगल सिलेक्शन करना चाहिए जो कि आपको बेटर रिफ्लेक्शन दे सके। वैसे ही आपको वर्टिकल जैसे क्रैक डिटेक्ट करना है तो क्रैक के लिए आपको कौन सा बेस्ट प्रोब रहेगा? तो 70 डिग्री इज द बेस्ट बिकॉज यू हैव मोर देन 70 डिग्री यू डोंट हैव प्रोब। तो 70 डिग्री गिव यू द रिफ्लेक्शन ऑफ द good reflection of the crack. If you want to find out the root defect, तो 45 degree is the better probe. तो डिपेंड कि आप कौन सा imperfection वेल में डिटेक्ट कर रहे हो। तो कहीं भी डिफाइन नहीं है कि ये वाला प्रोब आप सेलेक्ट कर लोगे और आपको ये डिफेक्ट मिल जाएगा। Orientation of the sound or defect should be perpendicular, then you will get the good result. If it is not perpendicular, तो आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो उतना इंटेंसिटी का नहीं होगा और इट इज अ चांस कि वो मिस हो जाए। Okay. तो ये आपको देखना है कि आप कौन से डिफेक्ट को डिटेक्ट करना चाहते हो। तो जो एंगल सिलेक्ट कर रहे हो दैट मोर परपेंडिकुलर होना जरूरी है। आपके पास 3 ही डिग्री के प्रोब हैं, 45, 60 एंड 70 डिग्री, राइट? तो एप्रोप्रिएट एंगल डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर? Okay. Okay. Okay, sir. तो यू कैन नॉट से कि मैं कैसे सिलेक्ट करूं। अगर तुमको क्रैक वर्टिकल डिफेक्ट डिटेक्ट करना है तो जनरली जो क्रैक है वो टॉप सरफेस में बॉटम में होता है और क्रैक जब टॉप एंड बॉटम में होगा तो जहां से क्रैक हुआ वहां पे एक कॉर्नर बन गया, उस कॉर्नर में 45 डिग्री का रिफ्लेक्शन आपको बेस्ट मिलेगा। तो अगर क्रैक डिटेक्ट करना है तो दैट इज अ गुड सरफेस के क्रैक। Okay. क्लियर? Okay, sir. मतलब Okay. टॉप एंड बॉटम के लिए। वैसे ही अगेन इन बिटवीन वाले डिफेक्ट डिटेक्ट करने हैं तो जो भी आपका एंगल परपेंडिकुलर होगा वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा उस डिसकंटिन्यूटी। Okay. Any more question? Next. Sir, how to we will give the name for defect name, sir? It's a root side, it's in between or top side. मतलब you से कि सपोज लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, लैक ऑफ फ्यूजन है, हाउ यू आइडेंटिफाई विद द यूटी, राइट? Yeah. करेक्ट। तो इसके लिए बेसिकली एक ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया गया होगा कि अगर समझो लैक ऑफ पेनिट्रेशन डिक्लेयर करना है तो बोथ साइड ऑफ द वेल आर शुड बी एक्सेस। तो आप दोनों तरफ से स्कैन करेंगे और दोनों तरफ से लैक ऑफ पेनिट्रेशन मतलब आपको रूट से रिफ्लेक्शन मिलेगा स्क्रीन पे। क्लियर? और फिर आप Okay. देखोगे कि एकदम रूट ओपन है तो आपको रूट से और कितनी दूर तक कितनी डेप्थ में ओपन है तो आपको उतने डेप्थ में रिफ्लेक्शन मिलेगा और उसके आगे जाएंगे तो रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा, मतलब स्क्रीन पे आपको इको नहीं दिखेगा। क्लियर? तो नाउ फ्रॉम वन साइड यू हैव वेरीफाई के ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ या यू कैन से क्रैक भी हो सकता है बिकॉज इंडिकेशन सेम होंगे क्रैक के भी और लैक ऑफ पेनिट्रेशन के भी। अब आपको ये जस्टिफाई करना है, आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम योर प्रोब से लेके कि वो सेंटर में है या यू कैन से कि वेल्ड के राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। तो जब आप सरफेस डिस्टेंस मेजर करोगे बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तो लोकेशन ऑफ द डिफेक्ट वेल्ड के सेंटर से राइट और लेफ्ट में आएगी। अगर राइट से आप स्कैन कर रहे हो तो राइट में आनी चाहिए, वैसे ही लेफ्ट से स्कैन करोगे तो लेफ्ट से आनी चाहिए। तो दोनों के बीच में गैप, जब दोनों तरफ से डिस्टेंस निकालोगे तो कैपिंग के ऊपर एक गैप दिखेगा। तो एक तो ये गैप रिप्रेजेंट करता है कि ये लैक ऑफ फ्यूजन है। दूसरा, जब दोनों तरफ से आप स्कैनिंग करोगे तो दोनों तरफ से जो सिग्नल मिलेगा आपको, लैक ऑफ पेनिट्रेशन में भी शार्प सिग्नल मिलता है, लैक ऑफ और क्रैक में भी शार्प मिलेगा। लेकिन क्रैक में दोनों की लोकेशन एक ही पॉइंट पे आएगी और लैक ऑफ पेनिट्रेशन में दोनों के बीच में गैप आएगा जितना कि आपका रूट फेस, रूट गैप।
तो ये बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जस्ट सिग्नल देख के आप नहीं बता सकते कि ये कौन से डिफेक्ट का सिग्नल है। ये आपको एवॉल्वेट करना पड़ेगा और एक पूरा फिगर बना के प्रॉपरली अगर एवॉल्वेट करना है तो कि यहाँ से इतना आता है, वेल का कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। जितना आपका बीम पाथ आया, जितना आपका सरफेस डिस्टेंस आया, उस पर मेजर कर मार्क करोगे और देन यू कैन से कि ये डिफेक्ट ये है। Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you, Abdul ji. Thanks. Thanks. Okay, thanks, sir. Thanks. Thank you so much, sir. Afzal sir, thank you so much for taking today's session. Moving ahead, ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, OSHA's, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Hindi, and Telugu. All these books are available. If you want to purchase, you can contact the below. Feedback. Please register on www.sadgunsang.org and go in your login and give your feedback. Thank you for being a part of today's Sadgun Sang. Thank you, everyone.